स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम, दैट इज मिलमैन्स थ्योरम. सो मिलमैन्स theorem. Now its another name is also called parallel generator theorem. Parallel generator theorem. So see what is this now. So I will here take two cases, first AC and for the DC. First for the case 1. This is case 1 for AC. Now, so we will take this AC case, then DC. This is V1. Similarly, I am having V2 and it is Z2. Z2. And then we have Vn and Zn. This is your Zn, not clearly. It is Zn and it is Vn. Now, and it is your load. It is your load impedance. Okay, so this is your IL. Now, first case I am using for the AC, then I will use for the DC. The case 2 is what? Case second I am using DC. So for the DC I will take, it is V1, then R1, V2, R2, and then we will have, it is dash, then we have Vn, then we have Rn, and finally we have load. Finally we have load resistance RL. Now what is the statement of this theorem? First let's see what is the statement. Now according to the Millman's theorem, n number of parallel generator can be replaced into a single practical generator. Listen carefully. According to the Millman's theorem, n number of practical generator can be converted into a single practical generator. और दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, according to the Millman's, n number of parallelly connected Thevenin's voltage source can be converted into a single voltage source. So let's first take the statement of this theorem. So statement क्या है, ध्यान से देखिएगा. Statement of this theorem. तो दो स्टेटमेंट बनेंगे इसके. तो स्टेटमेंट नंबर 1. So according to Millman's theorem, the statement number 1 गए, small n number of parallel connected generator, or be more precise, n number of parallel connected practical generator. Sorry, it is just to use one word also. Practical generator can be replaced by a single practical generator. ये बात समझ में आ गई होगी. So according to the Millman's theorem, small n number of parallel connected practical generator can be replaced by a single practical generator. अगर मैं दूसरे स्टेटमेंट की बात करूं, according to Millman's theorem, n number of
number of parallel and number of parallel connected Thevenin's and number of parallel connected Thevenin's circuit and number of parallel connected Thevenin's circuit can be replaced by a single Thevenin's इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है यहां तक ना। सो अगर मैं इसके स्टेटमेंट की बात करूं तो इसका स्टेटमेंट सिंपल सी है। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ पैरेलल कनेक्टेड जनरेटर्स हैं, प्रैक्टिकल जनरेटर है, तो हम उनको एक सिंगल जनरेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपली अगर हमारे पास n नंबर ऑफ थेवेनिन सर्किट है, n नंबर ऑफ थेवेनिन सर्किट है, तो हम उनको एक सिंगल थेवेनिन सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं सिंपली अगर डीसी की बात करूं, n नंबर ऑफ डीसी जनरेटर्स कैन बी n नंबर ऑफ प्रैक्टिकल डीसी जनरेटर कैन बी कनेक्टेड इनटू can be replaced by a single DC generator. Okay, so this is the statement for the DC. So DC के लिए स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं। अगर मैं बात करूं इसके दूसरे की, ड्यूअल ऑफ मिलमैन्स थ्योरम। सो अगर ड्यूअल ऑफ मिलमैन की बात करूं, अभी आगे देखेंगे, n नंबर ऑफ सीरीज कनेक्टेड नॉर्टन सर्किट can be replaced by n number of series connected Norton circuit can be replaced by single equivalent Norton circuit. So meaning क्या है, ये जो थ्योरम है मेनली बहुत सारे जो प्रैक्टिकल जनरेटर पैरेलल में कनेक्ट है उनको सिंगल सोर्स में कन्वर्ट कर देता है। अब ऐसा होता कहाँ है, ऐसा जो इन जनरल होता है, अगर इलेक्ट्रिकल में बात करें, इलेक्ट्रिकल में बहुत सारे जनरेटर पैरेलल में ऑपरेट होते हैं और ये कहाँ होते हैं, ये होते हैं पावर प्लांट में, और ये सारे जनरेटर जो इनफाइनाइट बस बार से लगे होते हैं। सो अगर मैं इस थ्योरम का एप्लीकेशन देखूं तो इस थ्योरम का जो मेनली एप्लीकेशन है वो कहाँ है, पावर प्लांट। सो इन पावर प्लांट वी हैव number of generators connected in parallel and that can be replaced into a single practical generator, either it is AC or DC. So this is the statement about the Millman's theorem. तो statement बहुत easy है और आपके एग्जामों में जो statement है वो कई बार पूछा भी गया है। अब इसमें बढ़ते हैं, इसमें कुछ फॉर्मूला बेस्ड चीजें हैं, वो क्या है वो देखते हैं। सो मैं डायग्राम एज इट इज बना रहने दे रहा हूं क्योंकि मुझे इसके नीचे जो है इनके एसी और डीसी के दोनों के फॉर्मूले क्या करने हैं, लिखने हैं। तो देखते हैं क्या है इनके फॉर्मूले। सो हमारे पास जो फॉर्मूले हैं वो है, देखिए अगर मैं एसी की बात करूं, सो V इक्विवेलेंट इन एसी इक्वल्स टू सिग्मा I इक्वल्स टू 1 to n। Okay, so V1 upon Z1 plus V2 upon Z2 plus Z dash Vn upon Zn divide by 1 upon Z1 plus 1 upon Z2 plus 1 upon Z3 upon 1 upon Zn. So it is a equivalent formula, V equivalent formula for the generator. अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो होगा क्या, the equivalent diagram for this is your V equivalent and then we have Z equivalent and that is the load part, that is it is A and this is B, so it is your load part. Okay, so it is load part. So meaning क्या है, ये बहुत सारे जनरेटर पैरेलल में कनेक्टेड है, उसको एक सिंगल सोर्स में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो इससे इजी तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये थ्योरम जो है सबसे ज्यादा लगाने में इजी होगी। और अगर इसी तरीके से मैं यहाँ बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, एक V इक्विवेलेंट लिया, यहाँ पे हमने लिया R इक्विवेलेंट, और फिर मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे हमारा लगा होगा लोड, that is your RL and we have to find the RL IL. Okay, so अगर मैं इसके फॉर्मूले देखूं तो ये होंगे, और फर्दर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूं, then it is sigma equals to I equals to 1 to n V1 into 1 upon Z in Z1 is 1 upon Z is Y, so it is Y1 V2 Y2 plus Vn Yn upon, it is what, it is Y1 plus Y2 plus Yn. So this is the formula of the V equivalent for the
AC. Now for the formula for the DCs, similarly we can have the V equivalent equals to V1 upon R1 plus V2 upon R2 plus V3 upon R3 plus Vn upon Rn divide by 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus 1 upon Rn. Now if you simplify this, now 1 upon Z is called Y, so but 1 upon R is called G. So it is V equivalent equals to V1 G1 plus V2 G2 plus dash Vn Gn divide by G1 plus G2 plus G3 plus dash Gn. So these are the formula related to the equivalent of V equivalent. Now we will see the formula with respect to what? Z equivalent. So हम इसको क्या कर देते हैं? इरेज कर देते हैं. So मैं इसको इरेज कर रहा हूं, देखिए, और V इक्विवेलेंट के फॉर्मूले जो है हम ऐसे ही लिखे रहने दे रहे हैं क्योंकि अभी मेरे को जरूरत भी पड़ेगी. तो देखते हैं क्या है. So let's see the formula of the Z equivalent. So अगर मैं Z equivalent के फॉर्मूला देखूं तो हमारे जो Z equivalent के फॉर्मूले हैं वो देखिए क्या होंगे. So Z equivalent in case of it is V equivalent for AC. Now for the Z equivalent for the AC it is 1 upon Z1 plus 1 upon Z2 plus 1 upon Z3 plus 1 upon Zn. Now if you simplify this formula, then it is 1 upon Y1 plus 1 upon Y2 plus Y3 plus dash plus Yn. So this is the formula for the equivalent impedance in case of AC. Now similarly you will have the formula for the R equivalent. So R equivalent is what? 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. Similarly we will have 1 upon Rn. Now you can have the inverse of that. So 1 upon G1 plus 1 upon G2 plus 1 upon G3 plus Gn. So this is the formula for the DC. So first thing क्या है, इसमें इस थ्योरम में आपको थोड़े से फॉर्मूले याद रखेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड थ्योरम है. बट आप जैसे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे आपको न्यूमेरिकल में चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी. आगे बढ़ते हैं. इस थ्योरम से रिलेटेड जो चीजें हैं क्या है देखते हैं. नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा. नाउ सिमिलरली अब अगर हम बात करें ड्यूअल ऑफ मिलमैन की बात करें, ड्यूअल ऑफ मिलमैन्स. ओके, सो ड्यूअल ऑफ मिलमैन में क्या करना है देखिए. अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं, पहले स्टेटमेंट में जो होगा पहले देखते हैं क्या है. सो अकॉर्डिंग टू द मिलमैन्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द मिलमैन थ्योरम, अकॉर्डिंग टू मिलमैन्स थ्योरम. सो इस थ्योरम में क्या होगा अब ड्यूअल में, अकॉर्डिंग टू मिलमैन्स थ्योरम n नंबर ऑफ प्रैक्टिकल करंट सोर्स, अकॉर्डिंग टू मिलमैन्स थ्योरम n numbers of practically connected series source, n number of practically connected current source can be converted into a single practical current source. तो स्टेटमेंट क्या होगा, according to the Millman's theorem n number of practical current source, n number of practical current source in series can be replaced by n equivalent or single practical current source. This is the statement for the dual of Millman theorem. But dual of Millman theorem के लिए फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है. आप सिंपली क्या करें, जस्ट वोल्टेज सोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन जो है
करंट सोर्स के लिए मार दें और यू विल हैव द फॉर्मूला। सो अगर मैं बात करूं, इसके स्टेटमेंट हो गया, हमारा दोनों का स्टेटमेंट हो गया, और लास्ट अब देखते हैं इसकी थ्योरी और क्या हो सकती है। सो ये थ्योरम जो है कब वैलिड है कब वैलिड नहीं है। सो अब मैं बात करूं पहला इसका एडवांटेज की। एडवांटेज क्या हो सकते हैं इसके। सो पहला अगर मैं एडवांटेज देखूं, एडवांटेज नंबर 1, with the help of Millman's theorem, with the help of Millman's theorem, we can reduce a large parallel or series connected network into a simple single network. Okay, this is the advantage number 1. Now what should be the advantage number 2? Now advantage number 2 is that, so we can find the load current. We can find the load current without the mesh nodal, then what, Thevenin's, Norton theorem. Okay, so we don't need to apply the method of analysis, that is mesh, nodal, Thevenin's, Norton, etc. जो भी आप लगाते हो लोड करंट को निकालने के लिए. So these are the two advantage of this theorem. Now last one is what? Application of this theorem. Application of this theorem. Now what is the application of this theorem? This theorem is used in power plant, where number of generators are, this theorem is used in power plant where thousands of generators are connected in parallel and giving load power to the consumer. Okay, so this is the main application and it is asked in exam where we can apply this theorem. So this is about the theory of the Millman's theorem. तो Millman's theorem क्या है? अगर हम Millman's theorem को conclude करें, बहुत छोटी theorem है. According to the Millman's theorem, n number of parallel connected Thevenin's circuit can be reduced into a single Thevenin's circuit either for the AC or for the DC. Simply अगर मैं dual of Millman की बात करूं, so n number of series connected Norton circuits can be replaced or can be reduced into a single Norton equivalent circuit. Sorry. Then what is the formula for V equivalent? The V equivalent formula is sigma I equals to 1 to n V1 upon R1 V2 upon R2 plus V3 upon R3 dash plus Vn upon R1 divide by 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 dash plus 1 upon Rn. That can be written as V equivalent equals to V1 G1 plus V2 G2 plus V3 G3 dash plus Vn Gn divide by G1 plus G2 plus G3. Now what is the formula for R equivalent? The formula for the R equivalent is 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 dash plus 1 upon R1, or we can write as R equivalent equals to 1 upon G1 plus G2 plus G3 plus dash Gn. So these are the formula related with Millman's theorem. Now अगर हम बात करें तो इनके सर्किट को थोड़ा सा और समझ लें क्या है ये. Then we will start some numerical problems on the
मिलमेंस थ्योरम। सो मिलमेंस थ्योरम आई थिंक समझ में आ गई होगी क्या है। थोड़ा बहुत जो डाउट होगा वो हम अभी क्लियर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल। सो वी हैव जस्ट दिस इज द फॉर्मूला, सॉरी दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मिलमेंस थ्योरम। सो V equivalent, Z equivalent, and this is your load. Okay, this is your load. Now this is the Millman's theorem, but what is the dual of Millman's theorem? This is what? This is I equivalent. Similarly, we have parallel connected impedance, Z equivalent. Then we will have the load. We will have the load. So this is your V equivalent, Z equivalent. This is IL. Similarly, I equivalent, Z equivalent, ZL and IL. So it is called Millman's. It is called Millman's theorem, and it is called dual of Millman. So this is just a theory about the Millman and dual Millman's. And now we will see the numerical part of this theorem. And numerical are very easy, and one should keep in mind while solving the Millman's theorem is of polarity. So polarity के बाद ध्यान रखना है, वो कैसे ध्यान रखना है वो हम अभी देखते हैं। तो हम लोग पहला न्यूमेरिकल लेते हैं Millman's theorem का, देखिए क्या है। So first numerical about the Millman's theorem is this. So क्या है हमारा पहला न्यूमेरिकल, देखते हैं। So the equivalent circuit of the following circuit is the question number 1. The first question of the Millman's theorem is the equivalent circuit of the following circuit is तो जो हमारा सर्किट है वो ये है, this is V, this is R, then we have bus bar, then we have V, R, then again we have V and R, and your options are, this is your terminal A and this is terminal B. Now first option जो है वो आपका ये है, this is V, this is 3R, so this is A and this is B. Similarly we will have the B option is, your B option is, this is 3V and this is 3R. This is B, this is A. Similarly, we will have the C option, and C option is that what? This is B, this is A. Now हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो है 3B upon R by 3, और हमारा जो D ऑप्शन है वो क्या है देखते हैं, ये है B, ये है A, इसी के साथ सीरीज में लगा होना चाहिए था R, बट यहाँ पर है R by 3, और ये है B। सो ये रहा हमारा D ऑप्शन। सो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सो दिस इज जस्ट सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम ऑन द मिलमेंस थ्योरम। तो देखते हैं क्या होगा भाई मिलमेंस थ्योरम का। सो अब आपको याद हो अकॉर्डिंग टू द मिलमेंस थ्योरम, सो फॉर्मूला हमारे क्या था, V इक्विवेलेंट बराबर हाउ मेनी सोर्स, 3 सोर्स, सो सिग्मा इक्वल्स टू I इक्वल्स टू 1 to n, I can write YI upon GI. I hope so. This is the general expression, but we have to take 3 times. So it is V1, sorry, it is V only. V upon R plus V upon R, then V upon R upon 1 by R plus 1 by R plus 1 by R. Now if you take 1 by R common, then we will have, so let's see what is this. So it is VG plus VG, then it is G
plus G plus G. So I will take V common. Then it is 3G ऊपर and 3G नीचे. So it is cancel out. So your V equivalent is V. ठीक है यहाँ तक. Now अब अगर हम R equivalent की बात करें तो R equivalent जो है मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं. So देखते हैं R equivalent क्या होगा. Now R equivalent का अगर आपको फॉर्मूला याद हो 1 upon R plus 1 upon R. So it is equals to 1 upon 3 by R. And if you solve this, your R equivalent is 3 by R. So is there any option which is providing you V equivalent V and R equivalent is R by 3? Sorry, it is R by 3. It is R upon 3. This is your option. So let's see. First option wrong because V it is 3R and 3V it is also wrong. 3V. So we have possibility of A and D. So D is correct. D is correct because it is giving you R by 3. So this is your answer. Now what is the exact meaning of this Millman's theorem? So if you draw the circuit of this thing, तो मीनिंग क्या है देखिए इसका. ये जो पैरेलल कनेक्टेड डीसी जनरेटर्स हैं या बैटरीज लगी हैं उनको हम इक्विवेलेंटली कैसे शो कर सकते हैं. एक हमारे पास जो सोर्स आ गया है वो कितने वोल्टेज का आ गया है, V वोल्ट का, और उसका जो R इक्विवेलेंट है दिस इज योर R इक्विवेलेंट. दिस इज हाउ मच, R by 3 एंड दिस इज A, दिस इज B. सो मीनिंग क्या है, अगर आपको इस थ्योरम का एग्जैक्ट मीनिंग देखना है, वी हैव 3 parallel connected DC generator that can be represented by a single DC generator, or we have 3 parallel connected Thevenin's equivalent circuit. यहां पर कितने सर्किट हैं, यहां पर जो है हमारे पास 3 parallel connected जो हैं 3 parallel connected Thevenin सर्किट हैं. क्या है, Thevenin सर्किट है. और यह हम कह सकते हैं प्रैक्टिकल डीसी जनरेटर है. कितने जनरेटर हैं, प्रैक्टिकल डीसी जनरेटर है. उनको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, हमने क्या कर दिया है, वी आर कन्वर्टिंग इन सिंगल थेवेनिन सर्किट, सिंगल थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट और सिंगल प्रैक्टिकल डीसी जनरेटर. सो अब मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो रहा होगा. सो तीन पैरेलली कनेक्टेड थेवेनिन सर्किट है या डीसी जनरेटर है, उनको सिंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं. ऐसा कौन करता है, ऐसा करता है सिर्फ एक ही थ्योरम है जिसका नाम है मिलमैन्स थ्योरम. अब तो मीनिंग क्लियर हो गया होगा ना सबको कि मिलमैन थ्योरम क्या है. सो मिलमैन थ्योरम बहुत ही इजी है, इट इज जस्ट फॉर्मूला बेस्ड थ्योरम. और हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं कि हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, देखते हैं. सो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है फॉर द सर्किट शोन इन फिगर फाइंड IL. फॉर द सर्किट शोन इन फिगर, फॉर द सर्किट शोन इन फिगर, फॉर द सर्किट शोन इन फिगर फाइंड IL. फॉर द सर्किट शोन इन फिगर फाइंड IL. सो IL को फाइंड करना है और आपका क्वेश्चन है ये, इट इज 5, देन वी विल हैव 10, देन वी विल हैव 4 एंड देन वी विल हैव a source of 16 volt, then we will have 2 and we have 8 volt, then we will have RL. We will have RL. So this is your question and RL is 3 ohm. So we will solve this question. Now अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करा जाए तो देखते हैं क्या होगा. तो सबसे पहले मुझे V इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए. सो V इक्विवेलेंट का अगर फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, V इक्विवेलेंट बराबर V1 upon R1. V1 it is V1, it is R1, V1 R1. So V1 R1 कितना है, 10 डिवाइड बाई 5. ठीक है यहाँ तक. सिमिलरली अगर मैं V2 की बात करूं तो V2 की वैल्यू कितनी है,
ये रही और ये रहा R2। बट अब क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, इस क्वेश्चन में पोलैरिटी का ध्यान रखना है कि सारे जनरेटर हैं जो एक जैसी पोलैरिटी के हैं, बट मीनिंग क्या है, माइनस प्लस। बट क्वेश्चन में करेगा का एक जनरेटर जो है वो अपोजिट पोलैरिटी का दे देगा। जब एक अपोजिट पोलैरिटी का दे देगा तो उसका साइन क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो माइनस कर दें इसका, -16 डिवाइड बाई 4। सिमिलरली अगर इसकी देखें, ये तो हमारा था 4, आई थिंक ये 4 ही था ना, सो सॉरी इट इज 2। सो अब ये देखें, ये माइनस से प्लस ही लगा हुआ है, तो अगर ये माइनस से प्लस लगा हुआ तो 8 डिवाइड बाई 2। नाउ ये तो हो गई ऊपर की बात। अब डिनोमिनेटर में देखें क्या था, 1 अपॉन था, सो 1/5 प्लस 1/4 प्लस 1/2। तो अगर हम सॉल्व करें इसको तो क्या आएगा, ये आ गया आपका 2 और ये आ गया -4 और ये कितना आ गया 4 डिवाइड बाई, so if you solve this I think it is come to 0, 1/4 plus 1/2, so 4 से 4 कैंसिल, so V equivalent is 0। now next part अगर हम solve करें तो R equivalent क्या आएगा, so R equivalent अगर आपको याद हो, it is 1/1/5 plus 1/4 plus 1/2। so what should be the LCM, and LCM should be of 5, 2 and 4। तो इनका अगर एलसीएम लेकर देखा जाए, so it should be 20, एलसीएम इज 20। ठीक है यहाँ तक। तो एलसीएम अगर हम 20 ले लेते हैं तो इट इज 4 and it is what 5 and it is what 10 and 20 is upside, so 20 is upside, so it is 15 and 19, so it is 20/19। now what is that diagram, so diagram is this, now V equivalent is 0 and what is R equivalent, 20/9 and what is your load, load is 3 ohm, so your load is 3 ohm। now IL you have to find, now IL is what, IL is V equivalent upon R equivalent plus RL। so मैंने कहा था ना, अगर इस थ्योरम में देखें तो जो लोड करंट है हमें बिना मैश, बिना नोड, बिना थेवेनिन और बिना नॉर्टन थ्योरम लगा निकल जाएगी। so it's very easy, so V equivalent is 0/3 plus what is this, 20/19, so I think it is 19, so 0 by something is 0 divided by something is 0, so your IL is 0। so ये हमने कुछ प्रॉब्लम देख ली, अभी तक हमने शायद 2 ही प्रॉब्लम देखी है। हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं मिलमैन्स की, और ये थ्योरम जो है आई थिंक बड़ी इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है। बस ध्यान क्या रखना है इस थ्योरम में, हमेशा ध्यान ये रखना है कि पोलैरिटी कैसी है, अगर सेम पोलैरिटी है तो प्लस, अगर जो बंदा उल्टी पोलैरिटी का दे रखा है तो उसको क्या लेना है, माइनस। तो नेक्स्ट